or Hindus. So very limited educations were provided. The aims of education, although of knowledge, the Islamic culture development was the basic important emphasis. But in addition to that, they were also giving education of arts, skills, and vocation also. They were also encouraging private tuition in the country, in India. So primary focus was imitation and also practice and memorization. The education system was purely imitation, practice, and memorization. And in higher education, self-study, sometimes lecture, sometimes explanations were adopted. So, but even if during that period, corporal punishment was also adopted. So, even though the teachers were called as ustad, and students, they have to follow the teachers. So it very, that means top to bottom, that directive principle. That means everybody has to follow the direction of the ustad. What if the ustad is saying something wrong thing, a bad thing to wrong, or wrong thing into wrong sense, that is to be accepted. So that nobody was able to question. So Islamic way of giving it. So not giving proper equality and education in the system. They were not giving equal education system, even though there are some muktas and gurus or teachers, but they were not giving completely freedom. They were not allowed, but they were giving whatever they want to give. So some sorts of restriction, some sorts of, we can say that means not very scientific way of developing the education system and giving education to all. That was not the fundamental principles of that particular stage. That is, we can say that is Muslim period or Muslim era, 1200 AD to 1700 AD. Now the British era, 1700 AD to 1947, 150 years they have ruled us, but we have succeeded. We have asked them to go out from our own country, and our teachers, our students, our fellow Indians, they have played a very significant role and removed them from our society, and we got independent. But during that period, British ruled over nearly 150 years in our own country, and they were interested for classical and spiritual education. And they also decided that government was not responsible for external affairs in India for the beginning part of that means the East India Company. The company wanted to educate only a few number of people, those who are required to run the government, not education to all. Only few, very limited number of peoples, so that they can rule over them and they will be accepting the British laws and rules and regulations. So they were trying to give little, that means few number of people education to run their government. But fortunately or unfortunately, Raja Ram Mohan Rai, Vidyasagar, and many other freedom fighters, they started Swadeshi movement to avoid British system of education. So, but gradually, subsequently, Educational Act, laws during British era, the Charter of Act 1813, they were invited missionaries, Christians to come and give education and expand education, what is to be needed for their own European, that means country. So Christianity, they have to invite and they have to give education. Open invitations were there. But downward filtration theory, education is to be provided to common people, but not to all. That was the philosophy behind that particular movement. But unfortunately, lot of movement, lot of restriction, lot of that means movement were started all over the country. Just I will be giving to that who are they. And but only one thing was important during this British period, that Wood Educational Despatch, that is 1854. That means according to that Wood Educational Despatch 1854, acceptance of educational responsibility lies in British government. They recommended, yes, government of British, they have to give educational responsibility. They have to give education to the peoples of India. And they have to develop the intellectual fitness of the students. And they have to give the moral character, setting up regular schools, colleges, universities, granting aid to the system of education, training to the teachers,
education of the women, vocational education. They were all, my point of saying is that Wood Educational Dispatch 1854, that was the starting point for good education in our own country. Started because that Wood, he has as a commission, as the chairperson of the commission, he suggested that yes, acceptance of educational responsibility lies in British government. That is the starting point for good education in our own country. But afterwards, when Indian Education Commission, we can say that 1800 something, 92 or 82 or something like that, the name I just forgot. That what why they recommended that vernacular language of education medium is to be started. So only from 1892 or 82, when Hunter Commission, they were giving recommendation. So that is the starting point. That means vocational indigenous education, education for all, scholarship to horizon and backward classes, education for aborigines and hill tribes, religious education to be provided. But when this 1892 or 82 dispatch and that means Indian Education Commission, Hunter Commission, that is the starting point. But fortunately or unfortunately, we can say that the education system, because the contributions of the fathers, teachers, gurus are clearly visible at that particular point of time. So that is why the traditions of celebrating that is dedicated teacher come into the existence at the particular moment. So teacher like we can Asaf Ali, that she was a Bharat Ratna, that the teacher, active during Quit India movement, and Sarojini Naidu, even Savitribai Phule, even Fatima Begum Sheikh, and Suchita Kripalini, Malati Chaudhary, Gopabandhu Das in Odisha, Navakrishnan Chaudhary in Odisha. They are all the leading figures, leading light for bringing quality educations before pre-independence India during the British period. They were propagating there should be education for all. Everybody should get education. There should not be no restriction at all. Because in Western, Gokhale, Gandhi, Binoba Bhave, Bal Gangadhar Tilak, Aravinda Ghosh, even we can say that K.M. Munish, Bhimrao Ambedkar, Lala Lajpat Rai, Maharishi Dayanand Saraswati, Lal Bahadur Shastri, all were the moment of that means providing wisdom for the freedom struggle. They are the real teachers. Their ideas super. They provided all important ideas for the that means that these educations, and these are the teachers of our own country that particular point of time before independence. They were giving lot of that means involvement as a freedom struggle, as a teacher, as a social philosopher, as a we can say that freedom fighter, as a educationist. Everywhere they were providing good education to our own country. Even sometimes they also established Sanskrit schools. That particular, that is also the contribution of Sanskrit school is also very important. That particular point of time for struggle for getting the education. Even in West Bengal, that Anand Mutt, Swami, Bankim Chandra Chatterjee, as well as Swami Sadanandji, the Gurukula, were also the manifestation of the art of teaching and learning. That is also it has started. By the end of that means we can say that. So Gandhiji started non-violent satyagraha, got wider acceptance before the democratic rules in our own country. So that is why the Premchand, Amarnath Jha, I can name it because I just listed down some place. Amarnath Jha, that means Acharya Kripalini, who joined in freedom struggle with the Khilafat movement, started their journey as a teacher. They were the teacher, but they started against the British rule because they were all creating havoc and indiscipline within our own country. To get someone will get education, someone will not get education. That type of that means policy they were adopting. That is why Syed Ahmad Khan, Dr. Zakir Hussain, Radhamon, that means Radhamon Gokhale, even also involved as a freedom movement as a teacher for bringing quality education in our own country. Even Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, Bipin Chandra Pal, Sam Prasad Mukherjee, and all were continue to inspire the generation to generation. Their contribution, their views, their ideas, their publication, their speech, all are
helping so many or the other for getting good education. That was the point. We can say that. So we can say they were the made more important contribution to education for the freedom struggle to get, because education is the only byproduct which can help us for our improvement. Without education, nothing can be possible to achieve in a perfect, in a very solid manner. So that they realized that they were the teachers, even though they are not there, their contribution, their views, even our respected sir was saying, Wardha scheme of education or basic education 1937, Gandhiji plan of education to enforce compulsory pre-primary education. In Wardha conference, the educationists, leaders, teachers, reformers, they took part in the deliberation in 1937. That a country we have to provide free and compulsory education up to 7 years. And we have to provide mother tongue based education. Every child must have to learn in their own mother tongue. That, because that is the most important, because if we are not teaching the children in their mother tongue, so we may not be able to, that means give proper education to them. Even we can say that education linked to manual as well as productive craft and art work, that was initiated by our father of the nation, Mahatma Gandhi. Law for Indian culture, that was the starting point. We have to respect our Indian culture. We have to develop all-round development of the individuals during that particular moment. And we have to give, they were giving emphasis that appointment of the female teacher. That concept has come from there, appointment of female teachers. Or we can say training to the teachers, emphasis on activity-based education, what we are saying today. That was the initiative by the Wardha, that means 1937, that means a Wardha conference. So this is a movement, our teachers, all the freedom fighters, all the that means before independence, all these persons, they were contributing directly or indirectly for the independence of our own country. So we cannot neglect them. We cannot neglect their views. We have to propagate. We have to, that means document it, and we have to channelize it throughout the country. Everybody has to learn the Indianization, so the present National Education Policy 2020, Indianization of education. That means Bharatiyata educations, value-based educations, or we have to give, that means we have to give, that means language, our mother tongue based education. Every child, they have to get mother tongue based. These are all the, that means contribution from the previous, before independence, pre-independence. So what we are today after 70, we have got 75 years of independence. So within that, whatever we are now doing, all are there, the contributions of the previous fathers and forefathers, as well as teachers and the freedom fighters. So we can say that all in all, so this particular movement is the, we have to accept that even if we can say that whatever may be the system of education, so all are directly or indirectly helping us to remove the darkness from the society. So that is the starting point before independence. During British period, 150 years, they ruled us, and our fathers and forefathers, they sacrificed the laws. They tried to give proper education to all the Indians of our own country. So if they could not have done, if they could not have sacrificed their life, ideas, if they could not have been published their ideas, they were not conducting the meeting and that means discussions in the country, then we could not have achieved the independence till now. So with these few words, just I can say that all in all, to getting the independence of India, contribution of teachers is a must, and they have contributed a lot. They have given a right direction for our own country. They have given proper education, what is to be done at the particular point, who is to, that means every Indians, whoever he or she may be, whatever community he or she belongs to, we are all Indians. So Indian values, Indian ethos, Indian culture, Indianization, that is to be propagated, and that has started the initiative before the independence. So with these few words, I must be very much grateful, thankful to NCTE for providing all of a sudden, because 136 we discussed all these things. We thought, let us take this challenge, and definitely we'll overcome, and we'll say something, maybe hopefully it will be giving some ideas related to getting the independence of India before, that means 1947. These are all different actions and activities undertaken. So we have to salute our respected, that means leaders, teachers, those who were there,
they have contributed immensely for the development of our own country after independence. So thank you very much for giving this opportunity to say a few words before the respected colleagues and chairpersons and the NCT. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पांडा सर। और मैं आदरणीय चेयरपर्सन सर का पीसी अग्रवाल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आपको मैंने बहुत कम टाइम में, हमने लगभग मेरा 3 घंटे में हमने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर लिया। वो सिर्फ आपके प्रयास से पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था सर। तो मैं सबके बिहाफ पे आपको एमओई के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पे आप सबका थैंक यू करता हूँ। और जल्दी इसको हम वेबिनार को अपलोड कर देंगे एमओई की साइट पे, तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Kindly conclude, sir. Kindly conclude, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब मेंबर से कि अपनी वीडियो ऑन कर लें, उसको हम एक बार फोटो ले लेते हैं सो दैट कि हम अपलोड कर पाए कि पार्टिसिपेंट से हमारे। प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर लीजिए सभी अपनी। Sir, we can request our respected principal to conclude the session and we can take a प्रिंसिपल सर, photograph. मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। एक बार हम फोटो ले लेते हैं, उसके बाद प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज सर। सर और भी थोड़ा लाइक आई रिक्वेस्ट मे बी पहले maybe फोटो 1 minute chance may be given to that other members if they like to सर speak. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम नेक्स्ट में करेंगे जी। आदरणीय प्रिंसिपल सर प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए। जी जी, पहले फोटो ले रहे हैं सर, पहले कंक्लूड करना है। हाँ सर, ले लिया सर, ले लिया, फोटो ले लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो एनके शर्मा साहब हमारे साथ हैं, ERC के रीजनल डायरेक्टर हैं ये NCTE के, और हमारे कलीग्स हैं। पंडा साहब ने बड़ा विस्तृत रूप से ये बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या रहा। इन्होंने प्री वैदिक, वैदिक, पोस्ट वैदिक, ब्राह्मणिक, बौद्ध काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, सब में हमें बताया कि कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शायद हिंदी में और मिक्स करके बोलूँगा तो ही ठीक है। तो हम काफ़ी अच्छी तरह ये सब जानते हैं कि बच्चे के मन मस्तिष्क पर शिक्षक का बहुत प्रभाव है, शिक्षा का बहुत प्रभाव होता है, और शिक्षा से हम उसकी फैकल्टीज को डेवलप करते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उसका सांवेगिक विकास, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, हम सब तरह का, फिजिकल, मेंटल, सब तरह का विकास, उसका इंटेलेक्चुअल विकास करते हैं। और जब तक बच्चे की सारी फैकल्टीज डेवलप नहीं होती हैं, वो एक अच्छा नागरिक नहीं बनता है। और अच्छा नागरिक जब बनता है तो उसमें ये विचार आने लगते हैं कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। अच्छे के साथ वो अपने आप जाता है और गलत के साथ, गलत से दूर होता है। जब जो हमारा आज मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा ये है कि टीचर्स का रोल स्वतंत्रता लाने में, भारत की आज़ादी में क्या है। तो टीचर्स का रोल डायरेक्ट नहीं होकर, डायरेक्ट तो होता ही है लेकिन डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट ज़्यादा है, कि वो जितने बच्चे हैं, जितने उसके विद्यार्थी हैं, उनको किस तरह से वो आंदोलित करते हैं, किस तरह से बताता है कि किस तरह से अच्छाई के साथ जाना चाहिए और बुराई का किस तरह से प्रतिवाद करना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए। और जब व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, दिस विजन इज गिवन बाय द टीचर टू द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन फील एम्पावर विद द एजुकेशन। पहले उनको लगता है कि मैं सामने वाले के साथ बोल नहीं सकता, हेजिटेशन है उसमें। जब वो उस एजुकेशनली साउंड हो गया तो उसमें इस तरह की हिचक नहीं है, वो प्रतिवाद कर सकता है। तो जिस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जैसे इन्होंने पंडा साहब ने बताया कि वुड्स डिस्पैच और हटलर आयोग और सार्जेंट कमीशन और ये सब आए आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले, उन्होंने सब ने इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसमें हमें, उन्होंने इन कमीशंस की रिपोर्ट्स ने और इम्प्लीमेंटेशन ये अवसर भी दिया कि इसमें क्या कमियां हैं और हमें किस तरह की एजुकेशन और चाहिए। तो एजुकेशन भी किस तरह की चाहिए, इसके लिए भी हमारा देश लड़ा एक्चुअली। और मातृभाषा में कहाँ कहाँ शिक्षा होनी चाहिए, कहाँ कहाँ स्कूल्स खुलने चाहिए, स्कूल पब्लिक सेक्टर में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी चला ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स ने केवल एजुकेशन में इतना सा कंट्रीब्यूट किया कि वो अपने लिए क्लर्क पैदा करने के लिए स्कूल सिस्टम को लेकर आए, और सर्वांगीण विकास का उनका बहुत दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शिक्षक थे, वो इस बात के लिए भी लड़े इन लोगों से कि सभी का शैक्षिक उन्नयन, शैक्षिक विकास होना चाहिए। और इसलिए काफ़ी सारी संस्थाएं हैं। इसलिए मातृभाषा में, वर्निकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश में अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। हमारी कल्चर क्या है और अंग्रेजों की कल्चर क्या है, हम अपनी कल्चर को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। दैट्स वाई
जैसे पंडा साहब ने भी कहा, पंडा साहब का ही मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इंडियनाइजेशन कैसे हो एजुकेशन का, क्योंकि जो ब्रिटिश एजुकेशन आ गई थी वो केवल कुछ क्लर्क पैदा कर रही थी और इसमें इनरोलमेंट 2-3% लोगों का था। 97% तो सिस्टम से ही बाहर थे, और जो थे वो भी केवल उन्हीं के काम आने के लिए पैदा होते थे, उन्हीं का काम करते थे। हमारी जो संस्कृति थी उसका तिरोहन हो रहा था, जो हमारे इथोस थे, परंपराएं थी, उनसे हम दूर जा रहे थे। इसमें शिक्षकों का रोल बहुत ज्यादा रहा। जो शिक्षक थे जिन्होंने ये समझा कि अंग्रेज किस तरह से हमारी संपदा का तो यूज कर रहे हैं, मानव संपदा का भी यूज कर रहे हैं, मैन पावर का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपने यूज के लिए इनको शिक्षित कर रहे हैं, उनका विकास उनके दिमाग में नहीं है। तो शिक्षकों ने ये महसूस कराया पहली बार कि ये शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास करे, केवल क्लर्क पैदा करने के लिए, केवल अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं हो, मातृभाषा में हो, सारी फैकल्टीज के डेवलपमेंट के लिए हो। तो जितने हमारे टीचर्स, काफी नाम इन्होंने बताया भी अभी, बड़ौदा में तो, बड़ौदा के नरेश ने तो ये महसूस किया कि प्राइमरी शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इन्वेडर्स रहे, जो आक्रमणकारी आक्रांता रहे, उन्होंने ना केवल हमारा शैक्षिक पतन किया, सांस्कृतिक विरासत को लूटा खसोटा, निराश किया, नैराश्य पैदा किया हम लोगों में, बल्कि उन्होंने हर तरह से हम लोगों को बिल्कुल नीचे पतित कर दिया। उस पतन से ऊपर आने के लिए, वो संभल लेने के लिए, साहस लेने के लिए हमारी अपनी एजुकेशन शिक्षा का जरूरी था। तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले। बड़ौदा नरेश ने इस तरह की शिक्षा सबके लिए सुलभ कराई अपने प्रोविंस में। विवेकानंद जी को तो उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया। तो जो जब कुछ ये इस तरह से प्रोविंसेस भी हमारे साथ आ गए, और जो वहाँ के टीचर्स थे, उन टीचर्स ने, शिक्षकों ने एक सामाजिक आंदोलन पैदा किया, ना केवल शिक्षित किया बच्चों को, पर एक सामाजिक आंदोलन पैदा किया। जो भी जितने स्वतंत्रता संग्राम हुए, जितने स्वतंत्रता संग्राम में जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसमें इस तरह से इनडायरेक्टली शिक्षकों का योगदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि समाज को आंदोलित कौन कर सकता है? आज भी हम जानते हैं कि यदि शिक्षक उठ खड़ा होता है तो समाज को एक साथ वो कर ला सकता है किसी भी चीज के लिए। इस तरह से शिक्षकों का योगदान बहुत इसमें महत्वपूर्ण रहा। हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर BN पंडा जी ने सविस्तार हमें बताया कि किस तरह से हमारी शिक्षा का विकास हुआ, सतत विकास हुआ, और कैसे गांधी जी ने, या कृपलानी जी ने, या गोखले जी ने, या तिलक साहब ने, कैसे, ये कुछ नाम हैं जो प्रोमिनेंट हैं, बाकी इसके पीछे भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम यहाँ ले नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। शिक्षकों ने छोटी छोटी जगहों पे बच्चों में, नागरिकों में ये कूट कूट कर भर दिया कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी गुलामी में हम नहीं जी सकते। हमारी शिक्षा खुद की शिक्षा होनी चाहिए जो खुद का भला कर सके, हमारे देश का भला कर सके। केवल अंग्रेजों की शिक्षा से हम शिक्षित नहीं हो सकते। तो इस तरह के विचार जो गुरुओं ने दिए, एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और जब ये जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो सीना तान के वो बच्चे भी खड़े हो गए। हम हमेशा जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यदि शिक्षक बच्चों को इस तरह की वैल्यूज उसमें डालता है, दिमाग में डालता है, तो वो किसी भी चीज से टकराने के लिए फिर वो मजबूत हो जाता है, उसमें इतना उत्साह आ जाता है, वो कहीं से भी टकराता है। इसी तरह से जो भी आक्रांता थे, या जो दबाते थे, सप्रेस करते थे, जो डिवाइड भी करते थे, हमें माइनॉरिटीज बना दिया, हमारे डिसएडवांटेज क्लास बना दिया। इसके पहले हम सब समरस सौहार्द ढंग से रहते थे। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी, तक हमारा बंटाढार कर रखा है। शिक्षा के माध्यम से ही हम सब एक हो सकते हैं, सामाजिक समरसता ला सकते हैं, सबका विकास, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हम सबको साथ ले, जो शिक्षा ये दे सकती है, टीचर ये दे सकता है, टीचर ये काम कर सकता है, जब हम सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं तो हम सबका सर्वांगीण विकास हो सकता है, और देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होने में समय नहीं लगाएगा हमारा, क्योंकि जन कल्याणकारी, हमारी नीतियां जन कल्याणकारी हैं। भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, वो किसी को अपने अंदर समावेशित नहीं करना चाहता, उस पर रूल नहीं करना चाहता। इसलिए विश्व गुरु का मतलब भी ये है कि जो विश्व को एक रास्ता दिखा सके, पथ दिखा सकते हैं। सब लोग सामाजिक समरसता के साथ, सौहार्द के साथ, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, इम्पैथी के साथ, सिंपैथी के साथ कैसे रह सकते हैं। और उसमें हमेशा शिक्षक का रोल रहा है, रहेगा, और शिक्षक ही इस तरह के सामाजिक आंदोलनों को प्रभावी रूप से सफल बनाएगा। तो ये आज की काफी महत्वपूर्ण हमारी चर्चा रही। मैं मुख्य वक्ता BN पंडा जी का भी इसमें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपने विचारों से अवगत कराया, उन्होंने तैयारी भी की, उन्होंने एक सतत हमारी यात्रा कराई कि किस तरह शिक्षा का विकास हुआ। मैं NK शर्मा जी का भी इसमें काफी धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने हमें अवसर उपलब्ध कराया कि हम अपने विचार यहाँ पर रख सकें। और जैसा अभी मोहालिक जी कह रहे थे कि हम सबको मौका मिलेगा, तो मैं शायद सोचता हूँ एनके शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आगे ऐसी कोई वेबिनार या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रखें जहां हमारी पूरी इंस्टीट्यूट जुड़ सके और वो अपने विचार आदान प्रदान कर सकें, हम सब एक दूसरे से सीख सकें। पर शायद आज का प्रोग्राम इतना ही है, तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. कि आवाज नहीं आ रही है सर? बस सर, हाँ अब बस अभी आया होगा। हाँ जी, तो क्या सर अभी हो गया प्रोग्राम? शर्मा साहब? शर्मा साहब चले गए मेरे ख्याल से। नहीं है सर, सर है? तो है सर। इनके साहब सर है सर। अच्छा साहू साहब, फिर हो गया क्या प्रोग्राम? ये हो गया। कैन वी लीव नाउ? Sir, we have to leave because they have already gone, perhaps. सर है, वो तो है, इसे इसमें दिखाई दे रहा है। स्टिल पूछ लेती हूँ। कुछ हम छोड़ दें क्या? आप लीव कर देंगे इसको? छोड़ देते हैं।